Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी +2 सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु +3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगिला ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े पार एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पार प्रति वीडियोज रे मु PDF लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड करि परिबा PDF को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अच्छी या क्लिक करी तुम एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई रखी तुम सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे आमे देखिबा द डिस्क्रीट एनर्जी एक्सचेंज बाय एटम जोटा कि बोर्ड्स एटम मॉडल थ्योरी रे रिजल्ट पळे आस्थिला थ्योरेटिकल रिजल्ट किंतु तार एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पुणी कले साइंटिस्ट फ्रांक एंड हर्च। So before that, let us see what is critical potential. Critical potential माने it is the least energy which is expressed in electron volts and required to excite a free neutral atom from its ground state to a desired higher energy state. ହେଲା एटा पुणी दुई प्रकार अछि, गोटे हला एक्साइटेशन पोटेंशियल, गोटे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ऑलरेडी एटा तमे +2 केमिस्ट्री भी पढ़िथिबो। सो एक्साइटेशन पोटेंशियल कहले एनर्जी in electron volts required to raise an atom from its normal state to a desired excited state hala is the excitation potential of that state. Now ionization potential kono gote atom ro ionization potential ame taku कहबा it is the energy required to remove an electron from a given orbit to an infinite distance from nucleus. Infinite distance कहला माने सबा शेष orbit को पड़े गला पूरा इलेक्ट्रॉन टा so that energy सबा शेष लास्ट ऑर्बिट रो एनर्जी एबे केते ही जिवो 0 ही जिवो हला। so let us see some of the example how to differentiate between the excitation and ionization potential. देखो we have seen that the energy associated with an electron in case of nth orbit of hydrogen atom यार वैल्यू केते आस्तला En equal to -13.6 divided by n square electron volt. now एबे जदि ए जो n स्क्वायर देखि परछो इट इज द क्वांटम नंबर यार वैल्यू आसीबो 1 2 3 4 एंड सो ऑन accordingly you will get the ground state, first excited state, second excited state and so on. So if we want to calculate the energy of the first, second, third orbit, then we will get the result like this -13.6 -3.4 -1.51 electron volt और सबा शेष ऑर्बिट पाई 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आसिला। सो एबे आमे जदि कहिबा केते एनर्जी दरकार in order to raise the atom from ground state माने n equal to 1 to the first excited state माने n equal to 2, that means 13.6 minus 3.4 एगला यार वैल्यू आसिला 10.2 electron volt. Similarly energy required to raise it to the second excited state माने n equal to 3, that means 13.6 minus 1.51, so 12.09 electron volt. एटा सब एक्साइटेशन पोटेंशियल आसिला। आ जदि आयोनाइजेशन पोटेंशियल आमे करूछु दैट मीन्स 13.6 माइनस कोन हबो सबा शेष ऑर्बिट पई 0 ही जिवो हला इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। सो रिजल्ट केते आसिला 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इट इज क्लियर दैट दिस वैल्यू 10.2 12.09 these are the excitation potential and 13.6 जोटा आसिला this is the ionization potential in case of your hydrogen atom. okay, एबे देखिबा एई जो क्रिटिकल पोटेंशियल को हमें केमिति एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करिबा. द प्रोसेस इज द फ्रांक एंड हर्ज मेथड. सो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को आगो देखिबा. यू कैन सी इन दिस फिगर वी हैव टेकन अ गैस ऑफ एन एलिमेंट व्हिच इज अंडर स्टडी हला जोटा कि फ्रांक और हर्ज साइंटिस्ट हला दे हैड स्टडीड दिस गैस एज द मर्क्यूरी वेपर है मर्क्यूरी वेपर को यही गैस अंडर स्टडी हिसाब से नहीं थिले. से माने कोन कले गोटे ग्लास ट्यूब टी भितर है या फिल करदेले है प्रेशर रखिले अबाउट 1 mm ऑफ मर्क्यूरी. नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग दिस फिलामेंट कॉइल है यही फिलामेंट कॉइल और या आम कैथोड भी कहि परिबा है एथरू इलेक्ट्रॉन गुडा प्रोड्यूस हेले आ गोटे ठी लो टेंशन बैटरी अछि है. Now these
electrons are accelerated towards this grid है by a potential difference V between the points F and G F और G भितर गोटे potential difference V रखा गला है V को एठी जो ए एरो मार्क देइचंती त माने it is a variable potential difference or variable voltage source यार value टा vary करची 0 to 60 volt पर्यंत okay now you see this P stands for the plate है एठी plate by collector which is kept at a slightly negative potential एठी जो देखि परथो V dash negative potential रे एटा कनेक्ट कराइछि काने यार नेगेटिव टर्मिनल को हमें प्लेट सहित अटैच करिछु हला सो ए नेगेटिव पोटेंशियल रो वैल्यू पाखा पाखी 0.5 वोल्ट with respect to the grid thus only the electrons from G can go to the plate or the collector which have kinetic energy greater than this potential difference माने जहारो kinetic energy greater than 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थिबो सेही इलेक्ट्रॉन गुडा ही जाई परिबे एठी जो गुटे ए देखि परछो this is the millimeter which will measure the plate current okay एबे आकु बढ़िबा देखो suppose we keep the value V dash as constant है and we gradually increase the value of V in small steps from 0 to upwards ताले गुटे हमें प्लॉट पाइबा है ए प्लॉट ऑफ कलेक्टर करंट अगेंस्ट द एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल जोटा कि हमें जदि प्लॉट करूछु देन ए ग्राफ रु देखा जिवो जे देयर विल बी नो कलेक्टर करंट फॉर द पोटेंशियल व्हिच इज लेस देन 0.5 वोल्ट काइना हमर से हिसाब रे ही प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल 0.5 वोल्ट रे रखा हिची तणु करी इलेक्ट्रॉन एनर्जी जते पर्यंत 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो बैरियर को न पार हिची से पर्यंत आउ इलेक्ट्रॉन प्लेट को जाई परिबोनी सो इलेक्ट्रॉन जदि प्लेट रे पहुंचलानी दैट मीन्स देयर विल बी नो करंट ओके सो above this 0.5 volt value the collector current will start increasing and it will increase continuously okay when the accelerating potential difference reaches a value of 4.9 volt एटा सब जतकी एक्सपेरिमेंटली जहाँ देखा गला है 4.9 volt जते बेले पहुंचला द करंट रे एबे गोटे सडन डिप आसिला डिप माने गोटे मिनिमम को एटा तळ को खसी आसिला सो again when the potential difference is gradually increased आउरी बढ़ेला above 4.9 volt current पुणी increase कला gradually तापरे गोटे maximum आसिला value जते बेले potential difference just below 9.8 volt हेची तो 9 volt रे कोन होउची करंट पुणी आ गोटे डिप देखाइला हैला एवं एई डिपटा बहुत स्टिप आसिला हैला सो एटा पुणी आ गोटे मिनिमम वैल्यू आसिला सो सिमिलरली एठी गोटे एम्ति significant decrease आसीबो कलेक्टर करंट रो which occurs each time the accelerating potential is increased by approximately 5 volt हैला सो देखो ग्राफ टा एई भलिया एठी आछि you can see the collector current is taken along y axis the accelerating potential is taken along x axis so 4.9 volt रे करंट एमती बॉडी बॉडी चलला किंतु 4.9 volt रे पूरा डीप आछि मिनिमम वैल्यू गोटे आसी गला पुणी बढ़िला जेतेबेला हम पोटेंशियल बढ़ौछु हैला पुणी एबे 9.8 volt रे पुणी आ गोटे डीप आसिला मिनिमम वैल्यू रे आसिला पुणी करंट बढ़ुची ओके सो now let us see how can we explain this graph suppose hame consider kariba a beam of slow electrons which are traveling through the mercury vapor kana glass tube re hame mercury vapor neichu at very low pressure now if these electrons suffer no energy loss hela jodi ye mercury atom sahito kichi bi collision hela nei tale energy loss bi kichi hela nei so they will obviously reach the collector plate now on increasing the accelerating potential ebe ahuri बेसी संख्यक इलेक्ट्रॉन बाहरिबो so collector current ता increase करिवो किंतु ए जो एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल रो वैल्यू जते बेले क्रिटिकल पोटेंशियल सहित मैच करि जाउची माने 4.9 वोल्ट हे जाउची देन द इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्रिड सो ए ग्रिड रे बे कोन हबो इलेक्ट्रॉन ता इन इलास्टिक कोलिजन हबो कहा सहित मर्क्यूरी एटम सहित एंड इट विल लॉस
all its energy. Thus, the electron will now left with no energy to reach the plate. So consequently कौन हबो collector current obviously drop करि जिवो abruptly and it will give you a minimum गोटे dip जोटा देखा गला. So this suggests that the atom has absorbed 4.9 electron volt of energy to raise it from the ground state to the state of higher energy. Okay. So ये जो current रा में dip देखिला जोटा कि minimum value देखैला at 4.9 volt actually एटा zero होउनी हैला पूरा minimum बरंग आछी किंतु zero होउनी काना statistically आमे जदि देखिबा there will be some electrons which may succeed in reaching the collector plate. So once collector plate को पहुंची गला माने current निहाती भाबरे आसीबो हैला they will reach the plate avoiding the inelastic collision with the mercury atom and record a minimum value of plate current at least. So then एबे आकु जदि आमे accelerating potential को further increase करूछु ताले electron पुणी plate आड़ को जीवो avoiding or after also inelastic collision. थोरे inelastic collision हेई की भी electron plate आड़ को मुहेइबो if they are left with energy to overcome the negative potential which is V dash. So obviously the plate current will again increase किंतु पुणी गोटे वैल्यू आसीबो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रो 9.8 वोल्ट रे हैला एज यू कैन सी इन दिस फिगर 9.8 वोल्ट पुणी गोटे डीप आछि व्हिच इज गिविंग यू अ सेकंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्लेट करंट. सो देखो ए जो 9.8 वोल्ट आसिला द करंट अगेन डिप्स टू ए सेकंड मिनिमम एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड इफ द इलेक्ट्रॉन जदि तार एनर्जी को आम कह 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं सप्लाई वोल्टेज जोटा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 9.8 वोल्ट. सो इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी होगला तुम के 9.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे विल सफर नाउ टू कंजिक्यूटिव इन इलास्टिक कोलिजन. थरे इन इलास्टिक कोलिजन रे एनर्जी लॉस 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दुई थर इन इलास्टिक कोलिजन हला दैट मीन्स टोटल एनर्जी पुणी थरे लॉस होगला with different mercury atoms before it reaches the plate. So such an electron excites both the mercury atoms to their first excited states, losing its energy which is 4.9 electron volt in each collision. So this will explain the second minimum. आगु बढ़िबा देखो each time एबे जो inelastic collision होउची mercury atom सहित ताले कोन होउची mercury atom को ये excite कर दोउची हैला mercury atom will be excited and return to the ground state by emission of photons. So by using the spectroscopic techniques आमे जदि wavelength of radiation coming from the tube ताकू जदि नहीं जिबा around 2536 angstrom corresponding to transition from fast excited state to the ground state, then we can calculate for the energy of the photon having this wavelength. It is simply आमे energy लगेबा E equal to h nu माने hc by lambda. h है Planck's constant, c है velocity of light, lambda रो already value 2536 angstrom पकेला. So in terms of एबे joule आसिला ताकू in terms of electron volt जदि आमे आणुछु तो simply divide कर दबा 1.6 into 10 to the power minus 19. So यार value देखो आसीगला mathematically भी 4.9 electron volts. So this experiment shows that the energy lost by the electron in its inelastic collision with the mercury atom reappears as a quantum of energy having wavelength hc by lambda. So एटा जो एनर्जी टा इलेक्ट्रॉन लॉस करि जाउथला सेटा ठीक सही समान एनर्जी गोटे क्वांटम बा फोटोन एनर्जी रे सेटा पुणी आसीगला माने लाइट एनर्जी रे कन्वर्ट हो जाइछि हला जारो की वेवलेंथ hc by lambda. So this experiment shows in a very convincing way the existence of discrete energy levels which are present in the mercury atom. किंतु गोटे ड्रॉबैक आसिला जोटा कि मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज दैट one cannot distinguish between excitation and ionization potential. Excitation potential कोटा ionization potential कोटा एटा को distinguish करिवनी एटा गोटे मूल गोटे ड्रॉबैक टे आसिला. सो लास्ट खाली देखि दियो जो डायरेक्ट एविडेंस आमे पाइला हला फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इट इज दैट द एटम एब्जॉर्ब्स डिस्क्रीट एनर्जी तार वैल्यू आसिला 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 9.8 14.7 एंड सो ऑन माने 4.9 रो डिफरेंस रे ही तमरो
discrete energy level aschi in order to get excited. So the energy other than these are not transferred. Hence, the sudden fall in current is observed for the values of 4.9, 9.8 and 14.7 volt. So it was concluded that the energy levels in the atom are quantized and absorption and emission of radiation by these atoms are quanta or photons, and these are not continuous but discrete. Okay. Thank you.